माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, Sir, this is a bit too much, sir. Please Even sit down, in spite please. of you, people seem to take their own turns to speak and have running commentaries without you allowing them. Sir, so this morning, I did say it and I repeat it now. This is a serious document. Clear. Oh my God. Please, sir. No, it cannot be like this, sir. You are asking them to sit. I'm not saying anything, and they don't want to sit. Every time honest answers are being given by speaker who raise it, they seem to be on their own to keep running commentaries going. They're not interested in my answer, but that will not stop me. I will still give it. Sir, therefore, Please. This document is a serious document which we want to place here, and it is placed with an intent that the House will be informed of the 10-year literal dedicated effort to get this government work in such a way that the economy is back on rails and also progress in such a way that our aspirations can be met. Now, the two rails, I want to leave this as a strong thought, sir. The two rails on which we want this economy to move forward are: one, correct all the misgovernance which happened during the 10 years. Equally, just not focus on that, but also aim to do a lot of reforms and also push the economy in such a way, nudge the economy in such a way, where necessary, incentivize the economy in such a way that the movement forward is smoothened. So the two tracks which we have followed since 2014 are: one, to remove all the hurdles, all the misgovernance, and equally focus on reforms so that the economy can move forward. Now, Honorable Member N.K. Premchandran, in the morning as well, and now, repeated baseless allegations in this white paper. Not at all, sir. Documentary evidence is given. Supreme Court verdicts where they have come has been quoted. CAG reports have been quoted. Their own steps to cancel orders somewhere, for example, Antariksh Devas, where it was a fraudulent deal and they cancelled it themselves. Some of their own statements have all been quoted, nothing which is a figment of anybody's imagination. To constantly, therefore, to say it's baseless allegation from a learned member like N.K. Premchandran, it's surprising that a document being placed here and open for everybody's discussion, person like N.K. Premchandran, who I respect a lot, who I respect a lot, says it's baseless allegation? Not at all, sir. I challenge anyone who says this document has anything which is baseless. Everything is with evidence. Everything is with evidence. I challenge anyone who would say that we've kept a white paper which has no proof. So that is one thing. And therefore, why now? No, please. ये तरीका नहीं है. माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, सबको अवसर दिया, और फिर आप जब माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं तो बीच में बैठकर कमेंट्री करते हैं, उचित नहीं है. आपको पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त अवसर दिया. नो प्लीज, नो माननीय मंत्री जी. सर, why now? ये डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर अभी क्यों? इसके लिए मैं जवाब अभी भी दे रही हूं. सबको मालूम भी है, हमारे व्हाइट पेपर में भी वो है. माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2015-16 में ही एक मीडिया के इंटरव्यू में बोले थे. It's not as if I am standing here to say it now. Even in 15-16, Honorable Prime Minister made a statement that there is a lot of suggestions coming, that I should
lay a white paper on the halat of the economy. But I'm not doing it because of national interest. I put the nation first. Because if the truth of the state of affairs of our economy was put out at that time, not one investor would have come to India. Our own citizens would have started feeling what is happening in this country. All institutions have broken down. No proper decision making is happening. Sir, the total big ticket corruption, leave the small ones, big ticket corruption in their 10 years. Big ticket corruption on an average was one at least each year. So, common people were really disillusioned. ये इस देश में क्या हो रहा है? So, हमारे अपने own citizens would have lost faith by the white paper. So we didn't want to, PM very clearly said, we didn't want to bring it at that time. Now, why now? 10 years. 10 years of governance. 10 years of sincere effort to clear up the economy. 10 years of sincere effort to make sure that we are not going to stagnate because of the legacy which has been left behind, and therefore we wanted to make sure that we do reforms. We also undertake everything which has to be done for cleaning up the system. And today, from the fragile 5 situation, we've reached the 5th biggest economy, and sooner we will be reaching the 3rd, now with authority, where the economy is already stabilized and people are coming in. Our foreign exchange reserve has improved. FDI is coming in. A lot of sovereign wealth funds are coming and having joint ventures, investment in greenfield projects. We had 10 years, which can therefore be periodically compared with those 10 years and with this 10 years, so that people are not going to say, you came in saying big things, but you know you can't implement, and therefore you are saying, like some of the state governments which are saying, having given false promises, they are not able to run their state government, put the blame on central government, come and protest in Jantar Mantar instead of being in their state and administering their state. So such things would have been easily accused on us at that time had the white paper been put then itself. We didn't do that. Responsibly, we took the challenge of getting everything sorted out. Now having sorted out, now having placed the economy in a proper position, we have, with documentary evidence, we put it out there, and that is why now the white paper is being put and nothing more. So, wo spasht main karna cha rahe hu, sir. Therefore, now, in the morning, I took a lot of detailed explanation on coal scam and also on the way bank as an institutions were misused. Now, I also explained how, if you were to compare Commonwealth Games and compare it with the G20, how it was organized, what was the difference. Now, I would just focus myself on 3 issues where I will elaborate so that we all know. I'm sure you would have seen it in the white paper, but I want to explain on 3 issues. How national security was compromised in those 10 years, and how environment as a ministry had become a bottleneck, chock-a-block. Not one proposal could move, and the country's developmental programs all suffered because environment clearances were not obtainable, and the details of that. And finally, how the leadership failed the country. On these 3, I want to elaborate, after which I will obviously come to responding on individual members and their questions. Sir, national security. Critical shortage of ammunition and defense equipment was the main feature of 2014 when we inherited the economy. Manya Raksha Mantri is here. I'm saying it before him. What was the halat then? Bulletproof jackets were not available for our soldiers. वो सामने बंदूक लेकर हमारी एनिमी खड़े होते तो उनके पास उनके अपने प्रोटेक्टिव गियर तक नहीं था. Night vision goggles were not available.
So in the nights, they couldn't do a thing. In pitch dark, they were exposing themselves like sitting ducks. So that was the attention. Now, it's all right. You can always say, oh, no, that is the only case you're talking about. Look at that attitude on how they want to place national security. I'm reading a line, I'm quoting from somebody's words. I'll say who it is. I'm quoting, sir. Independent India has had a policy for many years that the best defense is not to develop our borders. An undeveloped border is safer than a developed border. So, many years, there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. Unquote. ये किसने कहा सर? तब की डिफेंस मिनिस्टर, तब की रक्षा मंत्री A.K. एंटनी जी. ओके सर? दोबारा सर उनके बेटे हमारे पास है कि नहीं है वो मतलब नहीं है. रिकॉर्ड में डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रही हूं. डिफेंस सर एक ही. This is nothing to do with father, son, brother. It is a Raksha Mantri statement. Thank you, Gajendra Shekhawat ji. Sir, A.K. Antony ji also stressed a number of times that his ministry has used up 92% of defense budget and major acquisitions have major acquisitions have to wait and there's no money. Inaugurating the defense expo. Inaugurating the defense expo in 2014. डिफेंस एक्सपो को इनॉग्रेट करते हुए रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं प्रगति मैदान में कोट देयर इज नो मनी लेफ्ट ऑल मेजर प्रोजेक्ट्स विल हैव टू वेट टिल 1 अप्रैल. मतलब गवर्नमेंट बदल रही है, उनको समझ में आ गया है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, आप अप्रैल 1 को वेट करो. बॉर्डर में सोल्जर को मैसेज दे रहा है तब तक लड़ो कैसे भी, मगर मैं तो खरीदना मेरे से नहीं होगा. ये था उनका एटीट्यूड. सर इसके अलावा लिस्ट में बोल सकती हूं कितना करप्शन डिफेंस में हुआ करता था. अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर स्कैम 2013 3,600 करोड़ का था. और CAG 2011 में कुछ और संदर्भ में डिफेंस का विषय में पुल्ड अप द आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिले इन बाइंग आर्टिलरी गन्स. सो लगातार हमारे डिफेंस का कॉम्प्रोमाइज हुआ और टोटल इग्नोरिंग ऑफ आर्म फोर्सेस. करेक्टिव मेजर्स हमारी तरफ से क्या हुआ? डिफेंस बजट has doubled during the last 10 years. It was 2013-14 में 2.53 lakh crores था, अभी 6.22 lakh crores है 24-25 में. बढ़ गई डिफेंस बजट. इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बॉर्डर रोड्स एंड फॉर डिफेंस फोर्सेस equipment investments, defense capital budget increased from 86,741 crores 2013-14 में 86,000 crores था, अभी 1.72 lakh crores है डिफेंस बजट इस साल. सर 75% of capital acquisition budget is earmarked. ये मुख्य बिंदु है सर. 75% of capital acquisition मतलब खरीदारी के लिए जो पैसा देते हैं उसमें 75% डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए खर्च करना पड़ेगा. ये नहीं है कि विदेश से इंपोर्ट करते रहो. उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स ले आए. उसके वजह से उत्तर प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी प्रोक्योरमेंट
डिफेंस का प्रोक्योरमेंट उधर से अभी ज्यादा हो रही है। लॉन्च ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स फ्रेमवर्क सपोर्ट्स इंडिजिनस एमएसएमईज। सर, इसके अलावा एफडीआई लिमिट in defense production has been raised to 74%. All ordnance factory boards have been converted into 7 defense PSUs. सर, गर्व की बात है, मेक इन इंडिया पुश के वजह से आज आईएनएस विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल्स, मेन बैटल टैंक अर्जुन, आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, ये सब भारत में उत्पादन हो रहा है सर। इसके अलावा महिला आज राफेल भी उड़ा रहे हैं, बॉर्डर में भी बंदूक लेकर खड़े हैं, महिला पूरे के पूरे डिफेंस में है। सर, बार बार रोते थे एचएएल को क्या हुआ, एचएएल को ऑर्डर नहीं दिया। जब एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया नहीं 10 साल में एचएएल को, हम कर रहे हैं एचएएल को बिजनेस 4 लाख करोड़ तक दिए। बहुत सारे वैरायटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन उधर होने वाले हैं, 4 लाख करोड़ किए दिए ऑर्डर्स। और एचएएल का नया फैक्ट्री है जो माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट किए, फाउंडेशन स्टोन 2006 में ले किए, वो एचएएल मॉडर्न तेजस फाइटर जेट्स को अभी इंडिया सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं एचएएल। ये एचएएल है सर जिसके बारे में वो आंसू बहाते थे, एक ऑर्डर भी नहीं दिलवाया। हम इतने कर रहे हैं एचएएल के लिए। आत्मनिर्भर भारत का विषय यही है सर। डिफेंस का जब अच्छा खर्च होता है और उसका संभालते हैं ठीक से, नो टेररिस्ट अटैक हैपेंस इन द कंट्री। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और हाँ, चाइना के बारे में बोलती हूँ, चाइना के विषय आपको जरूर बोलना है सर। डिक्लाइन ऑफ मोर देन 52% इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड वायलेंस, डिक्लाइन इन 72% of security forces का death, decline of 68% in civilian deaths between 2014 to 23. So ये कंपेयर करके हम बोल रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी असर पड़ रहा है, क्योंकि डिफेंस के इक्विपमेंट का परचेस और सर इसीलिए वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन 22-23 क्रॉस्ड 1 लाख करोड़। डिफेंस प्रोडक्शन का इस देश में जो हो रही है उसका वैल्यू 1 लाख करोड़ से अधिक हो रही है। अभी डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इस देश में हो रही है। एक्सपोर्ट 85 कंट्रीज तक पहुंच रही है हमारे इक्विपमेंट्स। सर, कांग्रेस का ग्लेयरिंग मिसमैनेजमेंट ऑफ डिफेंस इश्यू, शायद इसमें एक और विषय मैं जोड़ रही हूं। इतना डिफेंस का मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और है विषय, और कुछ और विषय क्या है हमें तो मालूम नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या 2008 में चाइना में जाकर के कुछ एमओयू दस्तखत हुआ? उसका विषय क्या है? उसका विषय क्या है? अब तक उसका खुलासा क्यों नहीं हो रही? उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हो रही है? उसके वजह से डिफेंस में रोड नहीं बनाएंगे, बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं खरीदेंगे, बुलेट नहीं खरीदेंगे, आर्म फोर्सेस को छोड़ देंगे, पैसा नहीं है बोलेंगे। ये क्या, ये सब उसके कारण हो रहा है क्या? उसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहिए सर कांग्रेस को। सर, रेलवेज के विषय बहुत है मगर समय का लिमिटेशन है, इसीलिए जयंती टैक्स के विषय में आ रही है। जयंती टैक्स के विषय में आ रही है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सर, एवरेज डिले in grant of environmental clearances increased from
ऑन एन एवरेज 86 डेज होता था, वो जाकर के 316 दिन तक हुआ बिटवीन 2011 टू 2014। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कागज 1 साल से ज्यादा ऑलमोस्ट 316 डेज तक वेट करके फिर भी नहीं मिलता था। 350 फाइल्स उनके पास पेंडिंग में वेट करती थी, मूव नहीं हुआ। 315 फाइल्स। हाँ, रविशंकर जी पूछ रहे हु वाज द मिनिस्टर, मैं बोलूंगी सर वो एक कोटेशन से वो जवाब मिल जाएगा रविशंकर जी को, और वो कोटेशन उनका ही कोलीग है जो लॉ प्रैक्टिस करने वाले एक वेरी सीनियर लॉयर के कोर्ट है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनका कोट पढ़ रही हूं सर रविशंकर जी का जवाब के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी जी बोले, द टर्म जयंती टैक्स was well known and understood by business circles। वही है उसका डेफिनेशन। जयंती टैक्स मतलब क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी जी बोल रहे हैं कि ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पूरे समझ है इसके ऊपर, आप समझ लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डेट भी बोल रही हूं, टाइम भी बोल रही हूं, सोर्स भी बोल रही हूं, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में इसका रिपोर्ट हुआ 31 जनवरी 2015 में। जयंती टैक्स का मतलब पूरे बिजनेस वर्ल्ड का समझ है भाई। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ये कॉमन वर्ड है। आप क्या प्रश्न ऐसे तरीके से जवाब दिया गया, ये है उनके एनवायरमेंट क्लियरेंस का घपला। इसके विषय में आइए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतना बढ़ गए, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट पैदा किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे ठप पड़ गए, यूथ को इससे बहुत नुकसान हुआ, कोस्टल एरियाज में, माइनिंग एरियाज में काम ही नहीं आगे बढ़ा, और बिग टिकट प्रोजेक्ट्स लाइक पॉस्को एंड वेदांता completely were affected. Image of India as a business destination went for a toss completely. सर, मैं ये बात बोलना चाहती हूं, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया। वो जिस्या था, जिस्या बोलते हैं ना सर एक जमाने में, ये जयंती टैक्स जिस्या था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.